Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 4th December 2020. Standard 9th, subject Science. Chapter number 11, Work and Energy. In previous lecture, we have studied what is work. We also conclude the definitions of work. Work is equal to F into S, where F is equal to force and S is equal to distance covered by the object. Then we perform various activity like activity 11.1. Then we also studied the scientific conceptions of work. Then work done by a constant force. Okay, we have also studied this topic. Then we solved some examples. Example 11.1 and example 11.2. Now in this video we have studied what is energy. Topic 11.2, energy. Life is impossible without energy. The demand for energy is ever increasing. Where do we get energy from? The sun is the biggest natural source of energy to us. Many of our energy sources are derived from the sun. We can also get energy from the nuclei of atoms, the interior of the earth, and the tides. Can you think of other source of energy? Yes, we perform activity 11.5. A few sources of energy are listed above. There are many other sources of energy. List them. Discuss in small groups how certain sources of energy are due to the sun. Are there sources of energy which are not due to the sun? The word energy is very often used in our daily life. But in science, we give it a definite and precise meaning. Let us consider the following examples. When a fast moving cricket ball hits a stationary wicket, the wicket is thrown away. ओके एकदम बहुत ही तेज़ रफ्तार से जब गेंद आती है तो क्या होता है, वो विकेट को भी अपने साथ लेके चली जाती है. सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट व्हेन रेज्ड टू अ सर्टेन हाइट गेट्स द कैपेबिलिटी टू डू वर्क. सर्टेन हाइट से कोई हम ऑब्जेक्ट गिरा रहे है ना, वहाँ से सपोज़ हमने एक बड़ा सा स्टोन है, वो हम सर्टेन हाइट से ऊपर से हम नीचे फेंक रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी कोई इफ़ेक्ट होगी. क्या होगा, सपोज़ नीचे लैंड है तो लैंड में एक होल हो जाएगा. यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन रेज्ड हैमर falls on a nail placed on a piece of wood, it drives the nail into the wood. बड़ी सी एक हम सपोज हैमर लें, है ना, हैमर से हम एक नेल को वुड के अंदर, पीस ऑफ वुड के अंदर हम उसको प्लेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैमर उसके अंदर जगह करके अंदर चली जाएगी. इट ड्राइव्स द नेल इनटू द वुड. वी हैव ऑल्सो ऑब्जर्व्ड चिल्ड्रन riding toy such as a toy car, and when the toy is placed on the floor it starts moving. When a balloon is filled with air and we press it, we notice a change in its shapes. ओके, सपोज कोई बलून को हम ब्लो एंड एयर, उसके अंदर हम एयर जब डालते हैं तो क्या होता है, बलून के शेप में चेंज हो जाता है. As long as we press it gently, it can come back to its original shape when the force is withdrawn. However, if we press the balloon hard, it can even explode, producing a blasting sound.
ओके, बड़ा सा जो बलून है उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम उसमें एयर डालेंगे तो क्या होगा, वो ब्लास्ट हो जाएगा. In all these examples, the object acquired through different means. ओके, ये सारे एग्जाम्पल से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट्स एक्वायर्ड थ्रू डिफरेंट मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क. An object having a capability to do work is said to possess energy. तो this is the definitions of energy. ओके, वो एनर्जी की डेफिनेशन मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ. व्हाट इज़ एनर्जी? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी. एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेबिलिटी टू डू वर्क इज सेड टू possess energy. The object which does the work loses energy, and the object on which the work is done gains energy. How does an object with energy do work? An object that possesses energy can exert a force on another object. When this happens, energy is transferred from the former to the later. The second object may move as it receives energy and therefore do some work. Thus, the first object had a capacity to do work. This implies that any object that possesses energy can do work. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. Okay, students, so the unit of energy and works are same. Okay, the unit of work, the equations of work is equal to F into S. Okay, what is F? Force. So the unit of force is Newton. And what is S? S means के distance. So the unit of distance is meter. So the unit of work is Newton into meter. But the great scientist Joule, ये जो है वो जूल ने इवेंट किया था. So the unit of work is joule. Okay. But work is equal to energy. दोनों के यूनिट है, सेम है. The energy possessed by an object is thus measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is joule. 1 joule is the energy required to do 1 joule of work. Sometimes a larger unit of energy called kilojoule is used. So 1 kilojoule equals to 1000 joule. Our next topic, forms of energy. Luckily, the world we live in provides energy in many different forms. The various forms include mechanical energy, potential energy plus kinetic energy, heat energy, chemical energy, electrical energy and light energy. These are unit of energy. Think it over. हमें सोचना है उसके बारे में. How do you know that some entity is a form of energy? Discuss with your friends and teachers. हमें discuss करना है. This is the great scientist James Prescott Joule. मैंने बताया ना, जूल जो है वो यूनिट है, वर्क एंड एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है. James Prescott Joule was an outstanding British physicist. He is best known for his research in electricity and thermodynamics. Amongst other things, he formulated a law for the heating effect of electric current. He also verified experimentally the law of conservation of energy
and discovered the value of the mechanical equivalent of heat, the unit of energy, and the work called joule is named after him. Okay, so this is the great scientist. Then here the kinetic energy. Here one activity we perform. Take a heavy ball, drop it on a thick bed of sand. A wet bed of sand would be better. Wet sand हो तो अच्छा है. Drop the ball on the sand bed from height of about 25 centimeter. The ball creates a depression. Repeat this activity from heights of 50 centimeter, 1 meter and 1.5 meter. Ensure that all the depressions are distinctly visible. So कि ये सारा चीज़ हमें देखने को मिलती है. Mark the depressions to indicate the height from which the ball was dropped. बॉल कहाँ पे गिरता है वो हमें देखना है. Compare the depths, उसकी हमें depths मेजर करनी है. Which one of them is deepest, कौन सा जो वो deepest गया है. Which one is shallowest, why. What has caused the ball to make a deeper dent. Discuss and analyze. जो बॉल है वो एकदम ऊपर हाइट से गिरा हो, है ना, वो एकदम अंदर जाता है बिकॉज उसको प्रेशर है, उसको ज़्यादा लगता है. 1.5 मीटर की हाइट से हम डालें तो वो और अंदर जाता है ना. 25 सेंटीमीटर की हाइट्स में डालो तो ऊपर उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, उसमें इतना प्रेशर, इतना फोर्स उसमें नहीं आता है. ओके, तो 1.5 मीटर का जो बॉल है वो एकदम ही अंदर गया होगा. 1 मीटर का, उसके बाद 50 सेंटीमीटर का, ओके, 25 सेंटीमीटर का तो बाउंस होके वापस जाएगा. हियर अनदर एक्टिविटी. Set up the apparatus as shown in figure 11.5. Place a wooden block of known mass in front of the trolley at a convenient fixed distance. Place a known mass on the pan so that the trolley starts moving. ट्रॉली जो है वो मूव करना स्टार्ट करेगी. दिस इज़ द एक्टिविटी. ओके, ये व्हील्स वाला एक जो है वो टॉयज लिया और बाकी जो दो है वुडन सपोर्ट दिए. द ट्रॉली मूव्स फॉरवर्ड एंड हिट्स द वुडन ब्लॉक. फिक्स अ स्टॉप ऑन द टेबल इन सच अ मैनर that the trolley stops after hitting the block. The block gets displaced. Note down the displacement of the block. This means work is done on the block by the trolley as the block has gained energy. ब्लॉक को एनर्जी मिली है, इसके लिए वो ट्रॉली के साथ गेन होके नीचे आता है. फ्रॉम वेयर डज दिस एनर्जी कम. ये एनर्जी है वो कहाँ से आती है वो हमें देखना है. रिपीट दिस एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मास ऑन द pan. इन विच केस इज़ द डिस्प्लेसमेंट मोर. कौन से केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है वो हमें देखना है. इन विच केस इज़ द वर्क डन मोर. कौन से केस में वर्क भी ज़्यादा होता है. In this activity, the moving trolley does work and hence it possesses energy. A moving object can do work. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो वो वर्क कर सकता है. ओके, एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर कैन डू मोर वर्क देन एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिवली स्लो. A moving bullet, blowing wind, a rotating wheel, a speeding stone can do work. ये सारे जो चीज़ें हैं वो वर्क करती है. ओके, अब मूविंग बुलेट होते हैं, ब्लोइंग विंड तेज़ हवा चलती है, अ रोटेटिंग व्हील, अ स्पीडिंग स्टोन कैन डू वर्क. हाउ डज अ बुलेट पियर्स द टारगेट. कोई भी बुलेट हो वो टारगेट कैसे अचीव करती है. हाउ डज द विंड
मूव द ब्लेड्स ऑफ विंडमिल। विंड जो है वो मूव्स करते हैं। विंड से क्या होती है, पूरी विंड मिल जो है वो मूव्स होना, विंड की ब्लेड्स जो है वो मूव्स होना चालू करती है बिकॉज ऑफ द एनर्जी, है ना। मूविंग एयर हैज़ अ एनर्जी, इट इज़ कॉल्ड अ काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेस एनर्जी, वी कॉल दिस एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। ये कौन सी एनर्जी हुई, काइनेटिक एनर्जी हुई। अ फॉलिंग कोकोनट, a speeding car, a rolling stone, a flying aircraft, flowing water, blowing weed, a running athlete, etc. possesses kinetic energy. In short, kinetic energy is the energy possessed by an object due to its motions. The kinetic energy of an object increases with its speeds. काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है उसकी स्पीड के साथ, है ना। बहुत स्पीड होती है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है। हाउ मच एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ मूविंग बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशंस। बाय डेफिनेशन वी से दैट द kinetic energy of a body moving with a certain velocity is equal to the work done on it to make it acquire that velocity. Let us now express the kinetic energy of an object in the form of an equation. Consider an object of mass m moving with a uniform velocity u. Let it now be displaced through a distance s. When a constant force F acts on it in the direction of its displacement, from equation 11.1, the work done W is F into S. तो वर्क क्या होगा, F into S जितना होगा, हमने पहले ही देखा कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. The work done on the object will cause a change in its velocity. Let its velocity change from u to v. Let a be the accelerations produced. Small a क्या है, accelerations है. In section 8.5 we studied three equations of motions. The relation connecting the initial velocity u and final velocity v of an object moving with a uniform accelerations a and the displacement s is here the another equation. V square minus u square is equal to 2as. Okay, this is the equations, and this gives this equation. S is equal to v square minus u square upon 2a. From equations 9.4 we know F is equal to ma. Thus using equation 11.2, in equation 11.1 we can write the work done by the force F as W is equal to ma, in the sense v square minus u square upon 2a, or W is equal to 1 by 2 m into v square minus u square. If the object is starting from the stationary position, स्टेशनरी पोजिशंस होती है तो u की वैल्यू ज़ीरो ही होती है ना. तो वी हैव राइट w इज इक्वल टू 1 by 2 mv square. It is clear that the work done is equal to the change in the kinetic energy of the object. If u is equal to 0, the work done will be 1 by 2 mv square. Thus the kinetic energy possessed by an object of mass m and moving with a uniform velocity v
So here equations of kinetic energy. Here the equation of kinetic energy Ek is equal to 1/2 mv square. ये जो इक्वेशंस है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स में यूज़ होता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके स्टूडेंट, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।